Hello, friends. I welcome you all to this interview success stories session. And here is a student by name Sushil Singh. I take immense pride in introducing Mr. Sushil Singh, who was once a student and now is a NABARD Grade A officer. So, friends, now he would be helming the policy making of NABARD Grade A in next few years. And let us now go through the journey of Mr. Sushil. So, I welcome you, Sushil, to this particular Thank you, sir. session. So, Thank how's you. the feeling? Just. The the feeling of immense happiness after the great hard work is Okay. not to be described in the words, but I can feel it from the inside, and Okay. I am very happy since the result was announced. Okay. I congratulate you again. So, Thank you, sir. Sushil, let's begin with what's your background? Sure. So I am a BTech in Information Technology Okay. from Delhi College of Engineering, Okay. DTU. I am a 2016 pass out, Okay. and I've been working in the private sector since then. Okay. Uh, right after my college, I started working with the Citibank Okay. as a software developer. Mm-hmm. I worked with Citibank for 5 years. Okay. After that, last year I have joined aviation sector. I'm working with Indigo Airlines as Okay. a Nice. product manager currently. Mm-hmm. Okay. Along with my journey in the private sector, I was preparing for the government exams as well. Okay. This was something that I wanted to do for myself since I was in Okay. college. Nice. So, Sushil, let us know when did this idea of becoming NABARD grade officer actually kick in? Uh, so I was in the second year of my journey in the UPSC. Okay. In the first year, I was not able to clear my prelims. Okay. But in the second year, I gave the mains, but Mm. unfortunately, I did not clear the mains. Okay. Okay. So that was during the preparation of mains when the form came in for the NABARD. Okay. I talked to my brother and few of my friends. They suggested me to try for this. Okay. Also, there was an option of filling the form in the IT stream. Okay. Since I was already working, Mm-hmm. and I searched through the profile of an IT officer in the Okay. NABARD. Mm-hmm. This was very interesting, so I applied for the NABARD this year. Okay, nice. So, inferring from our conversation, I can tell to our viewers that you were preparing for UPSC. You Yeah, started sir. your UPSC journey, then you moved on to NABARD grade A. Yeah, this So, opportunity came on the way, so I applied for that. okay, okay. So, was it initially only UPSC, and did you appear for other exams like RBI, SEBI, or some other exams? So mainly I was focused for the UPSC. I did applied for the RBI and SEBI in year 2020, Okay, but okay, I was I didn't prepare for it, so ultimately I didn't even clear the prelims for the both exams. okay, okay, But I okay. gave few IT specialist officer IT exam for the banks like Canara Bank, Bank of India. I Uh-huh. did clear few of them, but I decided not to join them because of my uh, ongoing private job. Okay, that's sounds great. So, Sushil, let us know about any hardships that you have faced during this entire 5 year journey. And I think So more than 5 year, huh? yeah. Hmm. So the hardship for the hardship that I faced was especially for the IT officer, the Okay. people who are applying for the IT stream in SEBI, NABARD, or Hmm. they are applying for the specialist officer in IT. Okay. Since there is no structured format of the coaching, for example, none of the institute is offering the structured coaching for them. There Okay. is a lack of guidance. Sometimes it's even hard to get the previous year questions Yeah. or the Yeah. transcript of the interviews. Hmm. So all these things were hustle for few days, but when you are like, if you want to do something, you Yeah. will Yeah. find the way to do it. That's For in my case, I was able to find all these sources. For example, the previous year questions, a little guidance, okay. and the transcripts Hmm. using the channels like Telegram, or Hmm. I looked for the profiles on LinkedIn. I connected to the few of the people who are working in NABARD. So that really helped. Okay. So, friends, let me just inform you that Mr. Sushil Singh has made it to the has made it from the IT specialist officer, not in the general stream. Am I right, Mr. Sushil? Right, sir. Yeah, exactly. So, Sushil, let us know how did you keep yourself motivated? Because I see you are a working aspirant. Then there is Right, sir. very paucity of time you are facing once you come back from the work. Mm. Right, sir. Sir, in the motivation, I would like to mention one point.
Okay. That was in my third stage of preparation. That was when I started preparing for the interview after the mains result. Okay. I went to the YouTube channel Mm-hmm. after I got the suggestion from the EduTap video, Okay. uh, which suggested you should go through the YouTube videos of the NABARD. Mm-hmm. And there are many short videos of the small scale, medium scale, and the large scale projects that NABARD has done. Okay. My interest lied in few states where I have stayed. I watched 11 videos of Rajasthan, Mm-hmm. nine videos of Uttar Pradesh, and few videos of Haryana. Okay. And they were talking about the small initiative which empowers tribal people, women, Mm-hmm. poor section, farmers. They Okay. were talking about the projects that they have implemented. For example, they were talking about Badi project they have taken up in Udaipur. Okay. They were talking about the small dairy sector enhancement that they have taken in Dholpur in Rajasthan. Mm-hmm. So I made the list of these kind of case studies to be used Okay. in my interview, Mm-hmm. as well as this acted as a motivation factor. Okay. Apart from this, I talked to few of the seniors, my work colleagues, and we were just looking at the canvas that a private sector company or a government organization like Oh. NABARD, RBI, or SEBI can cover. Mm-hmm. So there was not a like that was not an ideal comparison also. Okay. The canvas that these kind of organization touch is huge. Okay. So for myself, I wanted to have a bigger impact of whatever I am doing. Oh. Maybe the profile remains same, but the Mm-hmm. impact has to be visible to me. So Okay. this was the motivating factor for me. This is really inspiring, Mr. Sushil. So, friends, this is an inspiration to all of us as well, who are preparing in the future. So, going forward, Sushil. So, if you were to mention three main pillars during your entire preparation, what were they? Like, if some people have it family, some people might say the UPSC background has helped them. So, three pivotal pillars that help you to clear or prevail in this particular examination. The first pillar was the motivation. You should be clear that why do you want to give this exam? Okay. What will you be doing once you are into the job? You have to look yourself that you are selected and what will you be doing after 5 years or let's say 10 years. Okay. The second is the smart hard work. Mm-hmm. Uh, I get this from my UPSC journey. I Okay. have been studying for the UPSC since a long time. Okay. So that helps. Then and the third is the single most factor, which is your luck. Okay. And the luck favors the brave. तो Mm-hmm. आपको मेहनत करनी चाहिए, स्मार्ट Okay. हार्ड वर्क करना चाहिए. That's If really the good. luck is with you, then you will make it. Okay. So, and let me reiterate, and you knew your why that you wanted to have a bigger impact. That Yes. is your driving factor. Yeah. So, what were your stress busters during the entire preparation? Obviously, there would be moments of up and down. You would be feeling low that it is taking time and all. So, how did you cope up with such times? So I remember in my journey, there was a time that there was a gap of 10 days between the prelims of NABARD and the UPSC prelims. Okay. So It was the I have, during this attempt, right? yeah, I have Okay. given only one NABARD attempt. This Okay. was the only attempt. That's nice. So I had to travel to another city to give my prelims. That Uh, was taking up my 2 days entirely, like okay. going, coming back, and giving the exam. Mm-hmm. So deciding if I'm actually going to attempt the prelims took some time for me, Okay. but the motivation was great enough so that Mm-hmm. I went and gave the prelims. Okay. I did not prepare for the prelims, so I was very underconfident after giving the exam. Okay. But fortunately, luck Mm-hmm. favored me and I cleared the prelims. Okay. After that, I faced difficulty in getting the previous year questions of the mains, the guidance. I Okay. was not even sure if the programming question will come or the theoretical question will come. Okay. Those kind of questions were answered with the help of EduTap and Hmm. few other sources which I got from Telegram. Okay. So this helped me set line my journey, like what I will be preparing for the means, how I will Okay. be thinking about the things. Okay. So I identified few of the important topics which are like networking, Mm-hmm. OS, Okay. database. These are the important topics for the IT officer exam for Okay. like even if you're applying for the specialist officer IT bank. Okay. So it's very important to identify what you will be covering in those stretch of 2 months or let's say 1 month, whatever you get between prelims and mains. Okay.
So it took me good 1 week to identify that. But once I identified it, I just stick to those things which I wanted to cover. And then the journey was smooth. Okay. On the day of exam, Mm-hmm. everyone faces the chills of the exam. Even I Okay. faced it. Mm-hmm. But you have to go sequentially, or in whatever way you decide you will attempt the paper, and you have to look the question that you are attempting at that very moment. You can't be running around two, three questions and thinking about two, three questions at a moment. So Okay. if you go one by one and Mm-hmm. apply all the knowledge that you have gathered over the years, and Okay. especially in last 1 month of your preparation, that knowledge will definitely come to your rescue and will reach the right answer. Okay. Sushil, as I see that there were multiple hardships that you faced during your entire journey. So just let us take some time and could you just elaborate on the process of the examination? I like everyone is familiar with the generalist stream paper of NABARD Grade A. So how exactly is the IT stream pattern of phase one and phase two? If you could quickly elaborate the aspirants who are preparing in future, that would be of great use to them. Yeah, sure, we can do that. Okay. So the exam for the prelims is more or less on the same lines as generalist, Okay. because we have all those sections like QA section, reasoning ability, Okay. computer knowledge is one, Hmm. English learning, decision making. So Okay. these are the common sections which are Five. there. Okay. Five non-merit sections are common. Hmm. Yeah, that is Okay. the qualifying one. The merit-based sections which are there, the Hmm. journal awareness, the Okay. agriculture and rural development, Hmm. the economic and social issues. Okay. That is also like there is one difference, like agriculture and rural development is not there. I think it's IT. Okay. So in this section, you have to align your preparation according to the journalist as only. Like Okay. you have to practice questions. Especially, I would like to mention that previous year questions, if you can get your hand on them, you have to practice them, especially the quant session, reasoning, Okay. and the English section and decision making. But they are not like they are easier than the SEBI and RBI papers, or Okay. the NABARD. They are easier on the easier side. Hmm. Then for the journal awareness, you have to follow the current affairs of last 3 4 months. I Okay. followed 2 3 months current affair I did from the EduTap and few other sources. I was Hmm. also preparing for the UPSC, so I was aware what is going around me. Okay. Then for the computer section, there are 40 questions, I think, if I'm not wrong. Computer is For 20, I guess. In your in IT stream, it would be 40, I guess now. Yeah, yeah. Okay. That computer, which in the qualifying, that is very easy. Like you have Okay. to Okay. know the shortcuts of Word, Uh-huh. PPT. Like, that is very easier. Okay. On the IT stream, there are 40 questions which Okay. touch your actual syllabus of your engineering. They Okay. ask question about Java. They ask question about syntaxes, Okay. SQL, Hmm. database, OS, networking. So there Okay. is a list of all the topics basically which covers your entire engineering IT, Okay. but they make sure that you are knowing the basics of everything, because they will ask only the basics. Even in the mains, the question were more or less basic. If you are Okay. clear with your basics, you will be able to sail through this exam. Okay. तो प्रीलिम्स का तो जनरलिस्ट स्ट्रीम की तरह ही रहता है पूरा पैटर्न. Okay. Only the factor is instead of ARD, we have IT stream. IT. Okay. Yeah. Then moving on to the mains, the paper one is Okay. common. That is It- the general English. Okay. We have to write a letter, we have to write an essay, and Okay. the prezi. So Yeah. that section is common. Okay. The paper two is the stream specific paper, which consists of the objective papers and the subjective descriptive Okay. text. Mm-hmm. So that, like, there is a proper set defined syllabus which is Mm-hmm. given by NABARD after the prelims result. Okay. So one peculiar thing that I noticed about NABARD exam was there was none of the topic from the syllabus which was not touched by the paper. Okay. For example, they will ask you 30 objective questions, Mm-hmm. out of which 20 will be 2 markers and 10 will be 1 markers for the Okay. IT. Mm-hmm. So they will make sure that if they have mentioned 12 15 topics in the syllabus, they will cover everything in that. Okay. Whatever is not covered in the objective, they will try to cover in the 6 questions that they will be giving in descriptive, Okay. which will be like 15 markers. 2 questions will be 15 markers, and two Okay. questions will be the 10 markers. Mm-hmm. So there will be option to attend 4 questions, but Mm-hmm. they will all be related to the theory of the computer. It will not be a programming question that Okay. I was under the assumption. Okay.
So, So yeah, please continue. they will cover entirely your syllabus, whatever they are mentioning, which Okay, is a good thing about and the bad thing also. okay. बट द पॉइंट इज कि आपको अगर बेसिक भी क्लियर है ना हर एक Uh, टॉपिक का, फॉर एग्जांपल ओएस में हाउ द डेडलॉक वर्क्स, डेटाबेस मैनेजमेंट में नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, तो okay, पीपल विद आईटी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. okay, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इफ यू हैव नॉलेज अबाउट देम यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. okay. That's good. Mr. Sushil, I see that you have a UPSC background also. There is a notion among aspirants that the somehow UPSC background helps an aspirant to clear the exam easily. So, do you believe that no assumption or notion that is prevailing among the aspirants? So this is very logical that Okay, if you are preparing for UPSC, then you have a good analytical skills. okay, So this will really help you in the paper one of the mains. For example, the journal English paper जिसमें description के ऐसे लिखने होते हैं हमें, okay, okay, preface लिखनी होती है या फिर तुम्हें letter लिखना होता है, तो तुम्हें comprehend करने में बहुत आसानी होगी. okay. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक Hmm. टॉपिक थे हमारे ऐसे के एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स, Okay. क्लाइमेट चेंज कैसे इम्पैक्ट करता है एग्रीकल्चर को, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. Hmm. ऐसे तीन या फिर चार टॉपिक थे ऐसे के. सो Okay. आई वाज एबल टू पिक द क्लाइमेट चेंज क्योंकि आई हैव रेड अ लॉट अबाउट क्लाइमेट चेंज, तो मैंने इंस्टेंटली वो वाला ऐसे लिखा. Okay. और इसमें 600 वर्ड की लिमिट होती है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट हेल्प्स, Okay. especially if you are good with your UPSC mains preparation. So I Uh-huh. was coming from that background, मैंने मेंस दिया था इस साल, Hmm. तो आई वॉज इन दैट फ्लो, तो मेरा काफी सही गया था इंग्लिश का स्टूडियो में. इधर हेल्प मिलती है, और एक और Okay. हेल्प मिलती है तुम्हारे प्रीलिम्स में. Hmm. व्हेन यू आर सॉल्विंग द रीजनिंग एबिलिटी, क्वांट का क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो, तो सीसेट का लेवल अभी काफी ऊपर जा चुका है यूपीएससी का. Okay. Okay. तो Hmm. वंस यू आर कमिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस, आप भले ही कम प्रैक्टिस करती हो सीसेट की, लेकिन पढ़ते तो हो. तो मैंने Hmm. जितना भी वहां किया उसके हिसाब से, लाइक दिस वाज इजियर ऑन द इजियर साइड, तो वहां भी थोड़ी हेल्प मिलती है. Okay, okay, I see. So, Mr. Sushil, as you were working, the question that arises is how did you manage time? So, what was your study plan like? What your time you could get? How did you manage to plan and how effectively did you utilize the time? इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से करूंगा कि Haj. आई गॉट लकी कि नाबार्ड एक आईटी स्ट्रीम भी प्रोवाइड करती है. Okay, तो दिस वर्किंग बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल सिंस लास्ट 5-6 years, दिस एक्चुअली हेल्प्ड मी. तो okay, व्हेन आई वाज गिविंग द मेंस का डिस्क्रिप्टिव के solution, for uh-huh, example, there was a question on Kellogg and Malloc, how that functions. okay, So I actually implemented these in a different fashion using some algorithms while I was working with Citibank. So I was okay, able to give a very good examples of all these questions when mm-hmm, descriptive questions were asked. okay, और आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 15-15 नंबर के होते हैं mm-hmm, और 10-10 नंबर के होते हैं, तो दिस वाज एन एज फॉर मी. और okay, भी नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन था. सो mm, देयर वाज अ टाइम आई वाज इम्प्लीमेंटिंग नॉर्मलाइजेशन इन आवर मोबाइल डेटाबेस व्हाइल आई वाज वर्किंग एट okay, सिटीबैंक. mm-hmm, तो आई वाज एबल टू पुट रियलिस्टिक एग्जांपल्स व्हिच आर नॉट टेकन फ्रॉम द बुक्स और एनी वेबसाइट. okay, तो इस तरीके से मेरी जो प्रोफेशनल नॉलेज है, इट हेल्प मी सेल थ्रू द एग्जाम, बिकॉज जस्ट बिकॉज इसमें आईटी स्ट्रीम थी. अगर मैं okay, जर्नलिस्ट स्ट्रीम से अप्लाई करता तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव मेड इट, लाइक मैं सेल थ्रू कर पाता इस एग्जाम के. okay, okay. That's really sounds great that the background has really helped you. या So now let us, move specifically towards the phase one preparation a bit. Okay. So, but Sushil, I got a question that you come from UPSC background and you could have even appeared in generalist stream. Why did you choose IT stream specifically? Is there? राइट. सो द रीजन दैट आई हैव बीन वर्किंग 6 years और Okay. मैंने ब्रेक नहीं लिया इज बिकॉज आई रियली लाइक द आईटी फील्ड. Okay. Or even the government of India is pushing the digital India. The Okay. digital is the future, is it's the present and the future. Okay. Okay. And I really liked working in this sector. तो Mm-hmm. इसमें ऑप्शन भी था आईटी स्ट्रीम का. आरबीआई में नहीं होता ऑब्वियसली. आई Okay. अप्लाइड फॉर द जर्नलिस्ट इन आरबीआई, फेल्ड टेरेबली. Okay. सीबी में होता है, प्रीलिम्स Mm-hmm. क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मैंने Okay. तैयारी नहीं की थी. बट नाबार्ड में ऐसा था कि आई स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड कि Okay. मैं जो हमारे जितने भी सेक्शन होते हैं क्वालिफाइंग में, Mm-hmm. उसके मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, Okay. व्हाट विल बी द सेफर अटेम्प्ट, तो वो मैंने Mm-hmm. सब प्लान करके किया इस बार. तो Okay. प्रीलिम्स हो गया, लेकिन आई वाज वेरी एप्रीहेंसिव कि Okay. प्रीलिम्स होगा कि नहीं.
So friends, that really, gives us a great insight that you need to have proper and solid planning, robust planning to clear and sail through this exam. So now let us move towards the specific phase 1 and phase 2 preparation. Before Sure. proceeding with the phase 2, let us talk about phase 1. So there are, as you have already told, there are 8 section, 5 are non-merit. So to our viewers, let me just tell you the non-merit section. One is English, the other one is quantitative aptitude, the third one is reasoning, and the fourth one is decision making, fifth one is computer awareness. So Sushil, kindly let us know what were your sources for this non-merit section. Uh, for the non-merit section, मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए, Okay. पिछले 2-3 साल के मेरे को मिल गए थे. Mm-hmm. I was able to judge the level of the questions which is being asked in sections like quant and reasoning and decision making were on the easier side. Okay. So if we look at the demography of this exam, most of the people are coming from the banking exam जो दूसरे बैंक एग्जाम देते हैं, Okay. SBI का देते हैं, RBI का देते हैं, तो Mm-hmm. उन if we compare to that level, it was on the easier side. तो Okay. इसकी I never worried about them. Mm-hmm. थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी, solved the previous year paper, gave few mocks of EduTap and few other Okay. institutes. तो I was able to like I was well beyond the जितना कट ऑफ expected था, तो Okay. इसका मैंने ज्यादा टेंशन नहीं लिया था. Okay. और इंग्लिश का अगेन लाइक आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, तो सी सेट के लेवल की प्रिपरेशन थी मेरी, विच इज Okay. ऑन अ Good टफर enough साइड. to. Uh-huh. या दिस वाज ऑन द लोअर साइड, तो Okay. इट वाज इजियर टू सेल थ्रू दिस. Mm-hmm. Okay. And the computer awareness and the decision making. द कंप्यूटर नॉलेज का एक लाइक यू कैन हैव एनी सोर्स, एक Okay. लूसेंट की बुक आती है या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का कंप्यूटर वाले फ्यू पेजेस लाइक 50-60 Okay. पेज का कुछ वो निकालते हैं पीडीएफ, यू कैन Uh-huh. गो थ्रू दैट वन. बट द क्वेश्चन आर वेरी इजी ऑन द कंप्यूटर नॉलेज क्वालिफाइंग सेक्शन के जो होते हैं. Okay. Uh-huh. And decision making, what was your sources? Just made the previous year questions as my base, Okay. and the types of question I identified कि Mm-hmm. कैसे पूछते हैं वो, and some practice from the other exam previous year questions. For example, I took मतलब SBI का या फिर IBPS के questions उठा Okay. लिए जो decision Uh-huh. making में आ रहे हैं. For Okay. all the section we can do this. Just Okay. identify the type of question they are asking in this particular, because IBPS और ये सब Mm-hmm. एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, एंड Okay. दैट टाइप्स कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम Mm-hmm. ईयर टू ईयर. तो Okay. करेंटली जो इन सब एग्जाम्स में फॉर्मेट आ रहा है, वो फॉर्मेट आप पिक करो, सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, यू विल बी Okay. कॉन्फिडेंट टू क्लियर दीज. Okay. So, friends, as we get to know that the previous year questions conducted by the IBPS really serve as a guiding light so that we are in tune with the trend of questions that are being asked in the current examination. So, one can go through them and analyze that. So, now, Sushil, coming to the merit section, which is general awareness and the IT stream 40 question and the ESI. So, what were your sources and how did you prepare for them? So the my touch with the UPSC preparation helped me here, Okay. क्योंकि I have attended like economy मैंने अच्छे से पढ़ी है from Okay. other sources. Mm-hmm. To list few, I have gone through the Mrunal का पूरा Okay. economy का course, which is Uh-huh. well above 80 videos or something. I have Okay. gone through his notes several times. Mm-hmm. So this was a comfortable section for me. For the current affairs, I refer to the 2 or 3 months current affairs. Okay. शायद एग्जाम जिस मंथ में था उससे 2-3 महीने पहले के, बट Okay. ऐसा देखा जाता है एग्जाम्स में कि Mm. किसी एक पर्टिकुलर मंथ के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं. तो इन Okay. आर केस जो जस्ट प्रीवियस मंथ था उसके क्वेश्चंस थे बहुत सारे. Okay. तो सिंस आई रेड फ्यू ऑफ द मैनुअल्स जो टेलीग्राम पे फ्री में अवेलेबल होते हैं, तो उसमें से Okay. काफी क्वेश्चन आ गए थे. Okay. तो ये थोड़ा मेरे लिए एप्रीहेंसिव था, क्योंकि मेरी तैयारी मतलब कोई बोल नहीं सकता कि आई हैव डन एवरीथिंग इन द करंट अफेयर्स. Okay. Okay. तो इट्स डिपेंड्स अपॉन योर लक कि आपको वहां आता है कि नहीं आता. तो दिस Mm-hmm. वाज ओके. कंप्यूटर का मैंने अच्छे से प्लान किया था. आई Okay. आइडेंटिफाइड फ्यू ऑफ द टॉपिक्स. मतलब वी फॉलो 80-20 रूल्स हियर. तो Okay. 20% सिलेबस जिसमें से 80% क्वेश्चन आते हैं, वो वैसे मैंने आइडेंटिफाई किया था, उन Okay. पे ज्यादा फोकस किया था. Mm-hmm. आई फॉलोड द EduTap का कंप्यूटर वाले वीडियोस. Okay. देयर वर फ्यू लाइव डिस्कशंस आल्सो Mm-hmm. ऑफ अदर इंस्टीट्यूट एज वेल एज EduTap. Okay. इन्होंने भी मेरे को ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टॉपिक में हेल्प किया. एंड
towards the pre-Ka exam, there was a list of important questions from each topic which was shared by EduTap and other institute as well. तो Okay. वहां से भी मैंने जो कॉमन टॉपिक्स थे उनको और अच्छे से रिवाइज किया right before Okay. going for the exam. This Mhm. really helped me. Okay, that really gives us a deep insight regarding the strategic, smart planning that was done by Mr. Sushil Singh. So, friends, now having got that information, Mr. Sushil, I come to know that this UPSC background has really helped you, in achieving this dream much easier. So, any piece of advice to the people who come from non-UPSC background? So, what would you say to quell their fears? That is it necessarily that one should be from UPSC background to clear this exam? It is not at all necessary. What is Okay. necessary is you should have a plan, Mm-hmm. and you should have, like, you should understand this, none of the knowledge goes to waste. There was a Okay. time in exam I was attending one of the question, and the knowledge which I had from, like, my school knowledge that I Okay. read in 8th or 9th class, that hit me in my mind and I was able to attempt that question perfectly. So Okay. there is only one mantra: you read whatever you are reading every day, Okay. and you should understand that none of the knowledge goes to waste. किसी ना किसी दिन किसी फॉर्म में तुम्हारे काम आएगी whatever you are Okay. reading. That's really deep insight. So, friends, there is no need to fear if you do not come from UPSC Right. background. You can eventually clear the exam. Just you need to persevere. And the idea Have a that Yeah, and have a good strategy. yeah, have a good strategy. So that was with regard to the phase one preparation. So now, Sushil, let us move to the phase two preparation. So Perfect. let us discuss about paper one, that is English, in detail. Then we'll move on to paper two. So what were your sources and how did you prepare for phase paper one? So the first step was to go through the previous year paper to Okay. understand the format. Mm-hmm. While going through that, I understand there will be a letter writing, there will be essay writing, and there will be prezi writing. Okay. So letter writing ke bhi, there were few, three or four kind of letter writing. So I looked through the format of Okay. the letter. Uh, Then I wrote few mock letters in each of those three kind of letters which are there. तो Mm-hmm. इस बार हमारे जो क्वेश्चंस थे, एक था कि write a letter to the manager to congratulate him on his promotion. So Okay. this was kind of an informal letter. The second topic which I wrote was the replacement of the faulty furniture. This was a formal kind of a letter. तो Okay. ऐसा similar मैंने formal letter में practice किया था, so I selected this. Okay. और एक शायद टॉपिक था that was related to some, we have to write a letter to the society का secretary regarding some of the problems going in the society, Okay. but I chose the second topic. Mm-hmm. So letter writing में it's important to follow the right format. Okay. तो इसमें आपको when you are giving the actual exam ना, तो Mm-hmm. you will understand कि you can't press enter, तो जिसकी वजह हाँ, से you can't go in the next line exactly. हाँ. before a full stop. Mm-hmm. तो मतलब तुम लेटर में क्या होता है कि व्हेन यू राइट अ टाइटल यू लीव अ लाइन देन यू Okay. स्टार्ट योर लेटर, राइट? Mm-hmm. तो उसको करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा था, आई पुट अ फुल स्टॉप देन वेंट टू द न्यू लाइन. तो Okay. मेरे को लग रहा था कि ये बैकफायर ना कर जाए, लेकिन इट वाज ओके, आई थिंक. Okay. दैट्स व्हाट आई डिड. हाँ, हाँ. मोस्ट ऑफ द पीपल वर एक्चुअली लाइक राइट मिडिल इन द एग्जाम, वो पूछ रहे थे कि अब नेक्स्ट लाइन में कैसे जाएं, तो Mm-hmm. एग्जामिनर वाज लाइक अब एग्जाम चल रहा है, व्हाटएवर यू वांट टू डू. हाँ, हाँ. तो दिस वाज वन ऑफ द peculiar थिंग दैट आई नोटिस. Okay. फिर मैं ऐसे का तो आई डिडंट प्रिपेयर, लाइक Okay. ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही मेंस दिया था, वेयर Okay. आई रोट आंसर्स ऑफ 160 टॉपिक्स, जो कि Okay. होता है पूरा. तो इसमें एक क्लाइमेट चेंज का टॉपिक आ गया था, तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि कुछ भी आए आई विल बी एबल टू राइट 600 Mm-hmm. वर्ड, इज नॉट अ बिग थिंग. Okay. तो मैंने क्लाइमेट चेंज पे लिखा. Mm-hmm. प्रेजी का थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा. आई थिंक आई रोट वन प्रेजी Mm-hmm. इन वन ऑफ द मॉक एग्जाम. 2-3 मॉक एग्जाम आई गेव, मैंने प्रेजी अटेम्प्ट किया था, तो ये भी हो जाता है. Okay. 130 वर्ड्स करने होते हैं, अराउंड 550 वर्ड्स का कुछ इलेक्ट्रिकल व्हीकल का पैराग्राफ था Okay. टोटल. Okay. So, Sushil, did you practice typing? Because typing is something really unique to this sort of exam. In Yeah. like in UPSC, there is a descriptive answer writing where you write in pen and paper mode. So, was this anything difficult in facing this interface? Since I'm a professional software developer, so Okay. I did not face this problem. I have a Okay. good typing speed.
तो मैंने Okay. अलग से कहीं प्रैक्टिस नहीं किया था, मॉक एग्जाम में जो भी लिखा था that was it. Okay. So, kindly let our aspirants know how many mocks are advisable for someone who is a beginner and who is not, familiar with this sort of an interface. Right. Hmm. So to get the understanding of the interface, it will take one mock exam. After Okay. that, you have to analyze your speed in each of the questions, whether you are able to complete it, how many spelling mistakes you are doing, how Okay. many back presses you are doing. Hmm. So as soon as you are comfortable, will Hmm. depend upon the person to person. For me, it took three mock exam. I took three mock exams. Okay. For the complete beginner, it might take 5 to 10 exams to get Okay. familiar with it. So you need to have your own customized strategy, friends. So now let us move on to paper two. See, descriptive pattern component was introduced, I guess, last year itself. So was there any unique strategy with regard to descriptive component and with regard to objective component? So let us know. Yes, like the type of question, since हाँ, the format was changed in the last exam, so मेरे रेफरेंस के लिए 1 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जो कि okay, बड़ी मेहनत से मुझे मिले थे, टेलीग्राम में किसी ने पोस्ट किए थे जिस साल वो okay, एग्जाम okay. हुआ था। तो हाँ, वहां से मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, okay. और 10 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के। हम्म, और जो 20 क्वेश्चन होंगे उनमें भी देयर वाज फ्यू क्वेश्चन विच विल बी हम्म, बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। okay. व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज कि हम्म, कुछ लाइंस में डिस्क्रिप्शन दी होगी। फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन माइट बी टॉकिंग अबाउट द डेटा वेयर हाउस okay. कॉन्सेप्ट, हम्म, और जो उस पैराग्राफ में नहीं होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। okay, तो एक क्वेश्चन था कि द पैराग्राफ वाज टॉकिंग अबाउट द ओएसआई मॉडल इन द okay. नेटवर्क, हम्म, और द क्वेश्चन वाज कि विच ऑफ द लेयर हैज नॉट बीन डिस्कस्ड इन दिस पैराग्राफ। okay. ये दो दो नंबर के क्वेश्चन थे, बट हम्म, इफ यू आर थ्रू विद योर बेसिक्स ना, यू हम्म, विल बी एबल टू कैच इमीडिएटली कि हाँ इस लेयर के बारे में, ट्रांसपोर्ट लेयर में शायद उसकी बात नहीं की थी, तो आई okay, वाज एबल टू आइडेंटिफाई इजीली कि एक दो बार पढ़ना पड़ता है बट टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम। okay. तो बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। तो हम्म, प्रीवियस ईयर से ये करना होता है कि तुम्हें पैटर्न फाइंड करना होता है। okay, तो शायद 10 पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे, ईच पैराग्राफ है 2 क्वेश्चन, शायद यही था। okay, okay. तो 30 क्वेश्चन तो 2-2 नंबर के थे, और 10 क्वेश्चन जो होते हैं 1-1 नंबर के, देवर रियली लाइक एक तो कॉम्प्रिहेंसिव थे, जो भी हाँ, सिलेबस उन्होंने दिया था, हर एक सिलेबस सिलेबस के एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन तो आया ही था एटलीस्ट। okay. और बट काफी बेसिक क्वेश्चन थे, हाँ, जैसे कि एक डिलीट होता है तो डिलीट कौन से इंडेक्स पे होता है, उसका एग्जांपल देके दिया था, एरे में डिलीट हो रहा है तो कौन सा एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। okay. हैश वैल्यू एल्गोरिदम का कुछ एक क्वेश्चन था। हम्म, उसके बाद लोकल ऑप्टिमा इन अ ग्रीडी एल्गोरिदम क्या होता है, तो ऐसे एकदम बेसिक बेसिक। एक बार पाइथन का जो लैम्डा फंक्शन होता है उसका कुछ क्वेश्चन था। okay, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बेसिक से काम चल जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव okay. में। हाँ, You don't have to deep dive into your 4 year syllabus that you have done in the BTech CSIT, वो करने की जरूरत नहीं है। okay, Coming to the descriptive part, ये मतलब आई फाउंड दिस टू बी मोर इजियर देन द ऑब्जेक्टिव पार्ट, रीजन okay. बीइंग कि हाँ, हर एक सब्जेक्ट के ना कुछ फिक्स टॉपिक्स होते हैं। okay. जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट द डेडलॉक मैलॉक एंड कैलॉक का फंक्शन था, हम्म, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक क्वेश्चन था, नॉर्मलाइजेशन का एक क्वेश्चन था। तो अगर okay. आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना, हम्म, फॉर्मेट तो चेंज हुआ है लेकिन उससे पहले भी जो क्वेश्चन अलग फॉर्मेट में आता था उसमें भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता था। okay, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर रिपीटेड। मेरे को पता था कि नॉर्मलाइजेशन का एक क्वेश्चन आना है तो नॉर्मलाइजेशन हम्म, अच्छे से कर लो, okay. एसडीएलसी का क्वेश्चन आना है तो वो आए भी। हम्म, लेकिन मतलब इसमें ऑप्शन भी होता है कि 6 क्वेश्चन होते हैं, आपको 4 करने होते हैं, okay. दो 15 नंबर के करने होते हैं, दो 10 नंबर के करने होते हैं। हाँ, तो यू हैव अ लिबर्टी हियर कि okay, आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, और उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे यू हैव द नॉलेज। okay, और नॉलेज से ज्यादा जरूरी है यू पुट अ गुड एग्जांपल्स। जैसे okay. मैं पहले बोल रहा था कि मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स जो मैंने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए हैं अपने हम्म, ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे एग्जांपल दिए। तो आई okay. थिंक दैट रियली हेल्प मी। Okay. So, Sushil, I get to know in generalist stream, there are 6 descriptive questions, 3 in 15 marker, 3 in 10 marker. Out of 3 in 15 marker and similar setup in 10 marker, one question is mandatory. And out of the two, one has the liberty to write any one among them. So was the similar approach or setup in your IT paper or what? या इट वाज सिमिलर। वन ऑफ द Okay. क्वेश्चन वाज कंपलसरी व्हिच इज गिवन Okay. ऑन नंबर 1 इन बोथ द सेक्शन। Okay. इन
the second question we can select any two, Okay, any okay. of the two. So we get an idea that, see, friends, that you need to have a practical approach towards the phase two component, especially the descriptive, that would really give you an edge over the other aspirants. So, Mr. Sushil Singh, how many full-length mock tests did you take before approaching the main examination? Sir, I took three full-length mock tests. Okay. Two were from the EduTap and one was from the other institute. Okay, okay. So I think, is there any advice that you would like to give to the aspirants regarding the phase two preparation for IT aspirants? Yes, the first one is there will be no programming question if they Okay, don't change the format. okay, The second one is the basics is the most important part. Stick to the basics. okay, Then the third one is give few mock exams until you feel comfortable with them. For okay, me, it took three mock exams. For you, it might take one mock exam or 10 mock exam, depending okay. upon your preparation level. So, friends, they were the great learnings given by Mr. Sushil Singh, which could be of great use when you start preparing. So, now let us move on to the interview preparation, Sushil. Right. So, how exactly did you prepare, and what was the feeling when you made past the mains? And so, let us know about it. So interview was one phase for which I prepared actually. Okay, okay. प्रीलिम्स में मैं तैयारी नहीं किया था क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था मैं. Uh-huh. तो इंटरव्यू में आई स्टार्टेड ऑन 2nd ऑफ जैन फॉर द प्रिपरेशन. रिजल्ट Hmm. शायद पहले आ गया था लेकिन मैंने 2nd जैन से शुरुआत की थी. Okay, द फर्स्ट एंड द बाइबल फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन इज द वेबसाइट ऑफ नाबार्ड. okay, तो 2-3 दिन मैंने स्पेंड किए वेबसाइट पे बट इट वाज ह्यूमंगस, काफी बड़ी okay. वेबसाइट थी. Mm-hmm. तो देन आई स्टार्ट, फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए. ट्रांसक्रिप्ट Hmm. मेरे को ज्यादा मिली नहीं थी, Okay. इनफैक्ट एक भी नहीं मिली थी. Mm-hmm. फिर मैंने बोला कि विदाउट ट्रांसक्रिप्ट आई कैन नॉट जंप इनटू द प्रिपरेशन. Uh-huh. टेलीग्राम पे थोड़ी फाइट मारी 2-3 दिन, फिर मेरे को Okay. 3-4 ट्रांसक्रिप्ट मिली मेरे को. Mm-hmm. एंड आफ्टर फ्यू डेज आई फाउंड 8-9 गुड ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर Okay. रिलेटेड टू द आईटी. Mm-hmm. तो सब मैंने कॉपी करके एक वर्ड फाइल बना ली Uh-huh. और मैंने कॉमन क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने शुरू किए. Mm-hmm. The common question was, why do you want to join NABARD? Okay. What are the digital initiative of NABARD? Mm-hmm. And जो 3-4 लोग जो थे जो एक्सपीरियंस थे तो उनसे पूछा गया था कि how your experience in the private sector would be helping NABARD. Okay. ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई किए और सबसे Mm. पहले इनका आंसर लिटरली मैंने लिखा कि मैं ये स्पीक Okay. करूंगा, ये सब बोलने वाला हूँ. Uh-huh. और फिर मैंने वो चीजें डिस्कस की. मैं लिंक्डइन पे आई गॉट कनेक्टेड टू टू ऑफ द आईटी नाबार्ड ऑफिसर हु गॉट सिलेक्टेड इन 2017. Okay. So one fine Sunday I called them. Mm. Luckily they were ready to help me. Okay. That's really great, huh? Mm. तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजे थे, पीडीएफ वगैरह, द प्रोजेक्ट्स दैट दे वर वर्किंग. दे वर लाइक हैप्पी टू टेल मी कि एक जयपुर में पोस्टेड थे आईटी ऑफिसर, तो Mm-hmm. उन्होंने अपने प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट दैट ही हैव टेकन इन अलवर, उसके बारे में अच्छे से बताया मेरे को. Okay. एंड दे ऑल्सो टोल्ड मी कि 3-4 मेजर चीजें, फॉर एग्जाम्पल पीएसीएस कंप्यूटराइजेशन प्रोग्राम जो है, Okay. इट्स Uh-huh. वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम, तो इसके Okay. बारे में यू हैव टू मेंशन इन योर इंटरव्यू. उन्होंने ऐसा Mm-hmm. बोला मेरे को. और बोला कि ये जो क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन नाबार्ड, इसका अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना Okay. समहाउ. Okay. तो फिर मेरे पास रफली पता था कि 18 से 20 मिनट मेरा इंटरव्यू चलेगा Mm-hmm. और उसमें से 3-4 क्वेश्चन यही होंगे. तो Mm-hmm. मैं इसमें जो बोलूंगा उसी पे काउंटर क्वेश्चन आ सकते हैं. Okay. तो आई वाज एबल टू फ्रेम कि मेरा इंटरव्यू कैसे जाने वाला है बेसिकली. Okay. Uh-huh. तो दिस टुक मी वेल लाइक 1 वीक से 10 दिन का टाइम लग गया ये सब करने में मेरे को. Okay. अब उसके बाद मेरे को पता चला कि EduTap ने जो भी मेंस में सिलेक्ट हुआ है उनको फ्री में वीडियो सीरीज दी है जिसमें Uh-huh. इंटरव्यू के गाइडेंस और क्या क्या करना है आपको दिए हैं. तो Mm-hmm. उसमें एक वीडियो था मैम का, उसमें वो बता रही थी कि वेबसाइट को कैसे पढ़ना है. Okay. क्योंकि वेबसाइट इतनी ह्यूज थी, मेरा मतलब आई वाज लाइक ओवरबर्डन्ड विद द इंफॉर्मेशन. तो उसमें Mm-hmm. से क्या कंज्यूम करना है क्या नहीं करना, वो मेरे को Okay. गाइडेंस मिली इस वीडियो से कि हाउ डू यू रीड द नाबार्ड वेबसाइट. Mm-hmm. और उसी वीडियो में लास्ट में मैम ने बोला था जब वेबसाइट हो जाए ना तुम्हारी तो यूट्यूब के वीडियोस देख लेना. Uh-huh. तो मी बीइंग अ काइंड ऑफ पर्सन जो वीडियो पे रिलाई करता है, तो मैंने Mm-hmm. वीडियो देखना सबसे पहले शुरू किया. Okay. और वहां मैंने आइडेंटिफाई किया कि 5-5 मिनट के वीडियोस हैं जहाँ से मैं केस स्टडी पिक कर सकता हूँ. Okay. एंड इफ आई एम एबल टू मेंशन 2 or 3 केस स्टडीज इन माय इंटरव्यू टू Mm-hmm. सम ऑफ द क्वेश्चन, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी. Okay. तो मैंने अपने स्टेट के सारे वीडियोस देखे, उसमें स्टेट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है जो भी Uh-huh. प्रोडक्ट आपके स्टेट.
तो Okay. मैं जो बात कर रहा था, धौलपुर का एक था, उदयपुर Hmm. में बांदी प्रोजेक्ट था, Okay. यूपी में भी सिमिलर प्रोजेक्ट्स थे जो मेरे एरिया के आसपास थे, वो मैंने पूरे आइडेंटिफाई करके Okay. उसका प्रॉपर गुड नोट्स में मैंने नोट्स बना लिए केस स्टडीज के। आई Okay. वेंट थ्रू अगेन एंड अगेन, 4-5 बार मैंने पढ़ लिया था उनको। Hmm. और उससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन के आंसर भी 4-5 बार अच्छे से पढ़ लिए थे, Hmm. तो मैं अच्छी पॉइंट पे आ गया था। उसके बाद मैंने किया 7 जनवरी को मैंने मॉक इंटरव्यू दिया एडुटेक का। एस Okay. एस तगाड़े सर थे शायद। Okay. And that interview, he told me about few keywords like anchoring, procurement, Hmm. interface. ये Okay. तुम्हारा रोल होगा बेसिकली बीइंग एन आईटी ऑफिसर। तो Okay. इससे मेरे को पता चला कि देयर वाज अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट आई वाज डूइंग Uh-huh. विदाउट हैविंग दिस इंफॉर्मेशन। तो मेरे को ये वाली इंफॉर्मेशन उस मॉक के इंटरव्यू की वजह से मिली। एंड Okay. दैट इज द रीजन आई एम गिविंग द इंटरव्यू टुडे, बिकॉज Oh, दिस that's इंटरव्यू रियली really. हेल्प मी। Hmm. तो इस इंटरव्यू के बाद मैं आई वेंट थ्रू few of the pointers provided by them. For Hmm. example, one was the कैसे नाबार्ड के पास इतना ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है विच इज नॉट बीइंग यूज्ड, तो उसको Okay. मोनेटाइज कर सकते हैं। Hmm. ये एक आइडिया था। द Okay. सेकंड आइडिया वाज बिजनेस इंटेलिजेंस का, एमएल और एआई का यूज करते हुए उस डेटा से वी कैन मेक सेंस आउट ऑफ दैट डेटा। Hmm. तो उस इंटरव्यू से जो मेरे को पॉइंटर्स मिले थे, लकीली आई यूज देम इन माय मेन इंटरव्यू एज वेल टू Okay. टाइम्स। Hmm. एक VACS कंप्यूटराइजेशन और ये एंकरिंग वाला जो पॉइंट था। Okay. उसके बाद आफ्टर माय मॉक आई वेंट थ्रू द वेबसाइट इन द फॉर्मेट व्हिच वाज टोल्ड बाय द मैम इन द एडुटेप वीडियो। Okay. तो मैं वेबसाइट को 5-6 दिन में अच्छे से कवर कर पाया था। एंड आई मेड माय 2 और 3 पेजर नोट्स इन माय गुड नोट्स आफ्टर गोइंग Okay. थ्रू वेबसाइट। Hmm. उसके बाद एनुअल रिपोर्ट पढ़ना जरूरी होता है। तब तक Okay. ना इस साल के जो इंटरव्यूज हो रहे थे उनकी ट्रांसक्रिप्ट आना शुरू हो गई थी। Okay. तो आई वॉज कीपिंग आई ऑन द टेलीग्राम ग्रुप्स जहाँ वो ट्रांसक्रिप्ट आ रही थी। Hmm. आई वॉज कॉपी पेस्टिंग दोज इन माई वर्ड फाइल, और Okay. मैं जो कॉमन क्वेश्चन थे वो आइडेंटिफाई करते जा रहा था। Hmm. और उनकी देखते जा रहा था। एनुअल रिपोर्ट से शायद क्वेश्चन आ रहे थे कि हैव यू रेड द एनुअल रिपोर्ट, ये Okay. डायरेक्टली पूछ रहे थे। तो Uh-huh. मैंने एनुअल रिपोर्ट में जो भी आईटी रिलेटेड चीजें थी वो अच्छे से पढ़ ली। Okay. देन आई टुवर्ड्स माई इंटरव्यू, उस दिन भी मेरे से पहले 5-6 लोगों का इंटरव्यू था। तो वो जैसे बाहर आ रहे थे मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई क्या Okay. पूछा। Uh-huh. तो उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन लाइक दे वर आस्किंग सिमिलर क्वेश्चन टू द Okay. पीपल। यू Uh-huh. हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट टू कैच दीज काइंड ऑफ Okay. थिंग्स। तो मैंने उनसे पूछ लिया क्वेश्चन, वहीं गूगल कर लिए कि हाँ ठीक है ये है। Okay. देन आई वेंट टू डू द इंटरव्यू। Okay. एक्सपीरियंस वाज फिनोमिनल बिकॉज द Okay. पैनल Huh, दैट so वाज how was टेकिंग। the panel? Was it cordial? Did it grill you? So what exactly? Hmm. So the panel was a very senior panel. Deputy Okay. Governor of RBI is taking interview. That itself was a different kind of experience. Okay. लेकिन they were very cordial, Okay. और काफी मतलब स्टार्टिंग में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे they were to make sure that you are comfortable. Mm-hmm. ग्रिल एज सच नहीं किया बिकॉज Okay. सिंस आई हैव अ प्रोफेशनल बैकग्राउंड। मैं 6 साल से इंडस्ट्री में हूँ, अलग अलग सेक्टर में। बैंकिंग में 5 साल रहा हूँ, उसके बाद Hmm. एविएशन में हूँ पिछले 5 साल Okay. में। So it was a good interview experience because they were talking about my experiences Okay. and how my project, the short assignments that I've got in working in Citibank and here in Okay. Indigo, how Mm-hmm. that will help NABARD. Mm-hmm. तो तो मैंने एनुअल रिपोर्ट में इनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट है, एक Okay. एक इनका एंश्योर है, इन सब के Hmm. बारे में पढ़ लिया था। और Okay. मैंने अपनी रेज्यूमे से इनको कंपेयर करके मैंने जो Mm-hmm. प्रोजेक्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया, हाउ दैट नॉलेज विल हेल्प मी टू ब्रिंग दोज थिंग्स इन नाबार्ड। तो ये Okay. मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में। एंड सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड। Okay. जो नाबार्ड के पैनलिस्ट थे उन्होंने बोला था कि इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट को आप कैसे इंप्रूव करोगे, Okay. इंश्योर को कैसे इंप्रूव करोगे। Mm-hmm. तो बैक टू बैक दे वर आस्किंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस वर आस्क्ड मेनली रिलेटेड टू द आईटी। Mm-hmm. और फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन वाज कि व्हाट आर द डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ नाबार्ड, Okay. सिक्योरिटी के लिए क्या क्या होता है, Okay. एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है ऑन ईच टच पॉइंट्स। तो उसमें टेस्टिंग के टाइम पे देयर वाज अ क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है, Okay. तो उसका देयर वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन जो मैंने Mm-hmm. थर्ड अटेम्प्ट में दे के आंसर दे पाया था मैं लकीली। Okay. तो ऐसा था। इंटरव्यू लास्टेड फॉर 15-16 मिनट्स। Okay. और आई वाज एबल टू गिव मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन Okay. क्योंकि they were related to my resume, my experience, Mm-hmm. and what impact I will bring if I get selected. He asked me कि your interview is over, do you want to ask anything? Okay.
or say anything. So I said it will be my pleasure if I get selected in this esteem organization. Okay. They all started laughing. I started laughing, and the interview was over. Oh, that's really appreciative of you. And Mr. Sushil, like I wanted to ask you a question. Is there any question, suppose as an aspirant, one might confront with a question where he would not be, knowing the answer. Is it okay to say no to that particular question, or how did you tackle such questions? So this kind of questions are there when you are countered with whatever you are saying. Okay. तो इंटरव्यू का एक स्ट्रेटजी होता है कि हाउ डू यू आंसर द क्वेश्चन इनिशियल क्वेश्चंस व्हाट एवर यू से Okay. क्योंकि वो कुछ भी तुम बोलोगे उसी पे काउंटर करेंगे दिस इज Okay. द थ्योरी ऑफ एवरी इंटरव्यू Okay. तो मेक श्योर दैट वट एवर यू आर सेइंग यू नो अबाउट दोज थिंग्स ऐसी Okay. सिचुएशन ना नहीं आओ तो अच्छा है बट Okay. वेन्स यू आर इन सच सिचुएशन Hmm. दैट विल बी मोस्टली ऑन द टेक्निकल क्वेश्चन बिकॉज अगर वो क्वेश्चन तुमसे पूछे कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर अगर Hmm. तुम उसको बोलो कि नो आई डोंट नो तो दैट इज Okay. नॉट एक्सेप्टेबल Exactly. Huh. तो तुम टेक्निकल क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल हैव यू सीन द क्या बोलते हैं एनुअल शीट यस Hmm. एंड ही स्टार्टेड आस्किंग अबाउट द नंबर्स कि क्या Hmm. नंबर्स हैं तो इन दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन से आई कांट रिमेंबर एज ऑफ नाउ सो आई एम Okay. सॉरी Hmm. तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में व्हाट ऑल आंसर्स आर एक्सेप्टेबल टू देम Okay. So, friends, we can get to know that Sushil was really street smart. He got to he got an insight from the IT officer of NABARD. Then he got through many hacks which really helped him in the interview. And these are the learnings that you can take from Sushil Singh, and you can also clear the examination. So, Sushil, let us know some unique experience through your entire journey. And there is one question that there might be many aspirants that you cleared the exam and you are sitting now here and giving a talk. What if you had not made it to the list? What would be your second plan B or something like that? frankly this is my plan B and I am Okay. happy that my plan B is successful now Okay. otherwise I was on my plan C. I was working in a private organization. Okay, that's really The good thing is now I will have just one aim. I okay. won't be filling the government exams, other government exam forms. Okay. I will be preparing for the UPSC, Okay. hopefully. Hmm. और मैंने पहले भी बोला था जब तीन चीजें सर ने पूछी थी कि क्या जरूरी होता है Okay. the luck the third one which I said luck is Okay. the most important factor Hmm. इस एग्जाम में मैं बता रहा हूँ लाइक आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स मेंस के लिए भी ऐसे ही था इंटरव्यू के लिए मैंने तैयारी की Hmm. लेकिन होना ना होना उसमें बहुत लाइक तुम्हारे लक का काफी ज्यादा फैक्टर है आई वुड से इट Okay. इज मोर देन 99%. Hmm. हार्ड वर्क भी इंपॉर्टेंट है बट मेरे Okay. एक्सपीरियंस से यू हैव टू बी ब्रेव Hmm. by doing smart work by being prepared you can't be like in the battlefield and saying कि मैं तैयार ही नहीं हूँ ये क्वेश्चन कैसे करूँ वो क्वेश्चन करूँ ये सब Hmm. excuses हैं which people make to themselves Okay. तो इन एक्सक्यूजेस से ऊपर उठ के आपकी तैयारी करनी है तैयारी हो गई उसके बाद सक्सेस रेशियो भी नो इज वेरी लेस Okay. Yeah. वहां तुम्हारा लक प्ले करता है Yeah. तो यही है लाइक यू हैव टू वेट फॉर योर Okay, चांस okay. So, as we all get to know, Mr. Sushil was really humble enough to say that luck plays a major role rather than his hard work, and that's really appreciative. Friends, keep working hard and also stay and keep waiting for your opportunity. So, Mr. Sushil, any parting advice or to all the future aspirants who are preparing for this NABARD Grade A examination? फाइंड योर मोटिवेशन Okay, be very clear why you want to do this whatever you are doing nabard rbi or upsc okay, it has to be very strong and it has to come from within you okay, अगर वो वाली मोटिवेशन रहेगी तो तुम एक हफ्ते पढ़ के ये नहीं फील करोगे कि अब कैसे पढूं मैं थोड़ा डाउन फील कर रहा हूँ ब्रेक ले okay. लूं ऐसा Mhm. आएगा ही नहीं बिकॉज यू विल बी इंटरनली अलाइंड टू योर गोल Okay, to make this your goal or make whatever you want to do as your goal and just go with it okay. अपने आप मोटिवेशन आएगी So that was really an enlightening session, Sushil Singh. And we wish you all the best from Team EduTap for your future journey in NABARD and as well as if you are appearing for UPSC. And we hope you even clear that exam as well. thank you so much Welcome. So that's all we have, friends, from this particular session. And thank you all. Thank you, all the Sushil. best everyone Thank you. Okay. Bye.